Hi friends, welcome to Kadam Study Center. So in this lecture, we will going to continue our topic that is forms of writing. Okay, हमने forms of writing में letter writing देखा था, तो आज हम report writing और writing resume ये दो topic आज हम cover करने वाले हैं. Okay, so let's start the lecture. So first topic is writing resume. Okay, so this word pronounced as a resume, not resume. Okay, so resume or resume pronunciation are different and meaning also different. Okay, but spelling is same. Okay, so pronounce it as resume. Okay, so resume also known as CV. Okay, curriculum vitae. Okay, curriculum vitae. Okay, pronounce it as vitae. Okay, so resume also known as CV, that means curriculum vitae. Okay, so the CV means resume which you send to an employer. अभी फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आइडिया है कि रेज्यूमे क्या होता है. हम जब जॉब के लिए अप्लाई करते हैं ना, तब हमें रेज्यूमे देना पड़ता है. ओके, सो अभी देखते हैं हम रेज्यूमे में क्या क्या इंक्लूड है. ओके, द सीवी विच यू सेंड टू एन एम्प्लॉयर व्हेन यू आर ट्राइंग टू गेट अ जॉब. Okay, is a brief written account of your personal details. Okay, so the CV include the personal details. Okay, your personal details such as full name, okay, address and telephone number, educational qualifications, work experience, and sometimes your interest and hobbies. Okay, so interests and hobbies are not must to written in CV, but if it needed or they ask, so you want to mention the interest and hobbies. Okay, so that's it. So guidelines for writing resume. Okay, there are some guidelines to writing a resume. Okay, not resume. Okay, so your resume must be neatly printed or typed and should be appealing to the eye. Okay, so when you are going to written a resume or type it, so it was neatly printed and typed and should be appealing to the eye. Okay, then the placement and sequence of the information should be attractively designed. Okay, the sequence of information should be proper. Okay, then resume will look like attractively designed. Okay, subtitles should be easily visible. Okay, so titles and subtitles should be easily visible. Now attractively designed is not like you want to design your resume. Okay, आपको आपका resume डिजाइन वगैरह तो नहीं करना है, लेकिन सिर्फ एक सीक्वेंस में लिखा होना चाहिए और अच्छी तरह से एक के नीचे एक लिखा होना चाहिए, या फिर प्रिंट किया हुआ होना चाहिए, या फिर टाइप किया हुआ होना चाहिए. ओके, सो दैट्स इट. Then do not cram too much material on a single sheet. Okay, so no need of cram too much material on a single sheet. Okay, give your contact details. Okay, so these are main points what will include in your resume. Okay, so give your contact details such as address at which you are presently living. Okay, your present address, contact details may must है. Okay, a telephone number and your email address. Okay, telephone number is not must, you should give your phone number also. Okay, that is currently in use. Okay, so that's it. Be sure to clearly list your academic qualifications. Okay, so what are your qualifications is also is mentioned in your resume. Okay, and your work experience if any. If you have done work before doing this job, then you also mention your work experience in resume. Okay, so just wait for a minute. Mention any other job related skills. Okay, you can also mention, suppose you are going in a IT industry to present your resume, okay, for a job, then you can mention your technical skills like coding language, okay, etc etc. Okay, so mention your job related skills. Okay, avoid giving personal informations. Okay, ज्यादा ही personal information नहीं देनी, such as marital status and hobbies. Hobbies अगर उन्होंने पूछे तो आप दे सकते हो, एंड हॉबीज आर स्ट्रिक्टली ऑप्शनल अनलेस आस्क फॉर. देखो, अवॉइड गिविंग पर्सनल इंफॉर्मेशन सच एज मैरिटल स्टेटस, हॉबीज आर स्ट्रिक्टली ऑप्शनल अनलेस आस्क फॉर. ओके, then these are sample resume. Okay, here I can mention a resume, so nothing special about the resume. Okay, so this is sample resume. Okay, observe this resume. Here name of the resume writer, then address. Okay, address, then contact number,
मेल एड्रेस, ओके। सीक्वेंस याद रखो, सीक्वेंस में आपको बता रहा हूँ, नेम, पर्सनल डिटेल्स में नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस। देन ऑब्जेक्टिव में आपका आप मतलब क्या मेन जो है आपका एन एंट्री लेवल मार्केटिंग और मैनेजर मैनेजमेंट पोजीशन विद मीडियम साइज बिजनेस, मतलब आपको आप किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो वो आपको यहाँ पे लिखना है, ओके। देन एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको लिखना है, ओके। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेजर माइनर सब आपको इसमें मेंशन करना है। देन योर स्किल्स एंड एबिलिटीज रिलेटेड टू द जॉब, ओके। देन सेल्स आपने लिखे नहीं लिखे वो जॉब पे डिपेंड करता है, जॉब किस टाइप का है, ओके। देन कम्युनिकेशन स्किल्स, ओके। then references last mein, okay. So this is sample resume, okay, you can also read it, okay. Then our second topic is report writing, okay. So report writing is nothing special about report writing, because you were learn report writing in 10th standard, 10th or 11th standard, okay, in writing skill section, okay. आपके बोर्ड एग्जाम पेपर में आपको राइटिंग स्किल सेक्शन में रिपोर्ट राइटिंग ये टॉपिक था, ओके। अच्छी तरह से याद है मुझे भी और आपको भी याद होना चाहिए। तो एक बार मैं आपको रिपोर्ट राइटिंग में शॉर्ट बट स्वीट आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ओके। सो लेट्स सी, रिपोर्ट इज अ इंफॉर्मेशन ऑन एन इवेंट, सिचुएशन और प्रोसेस। एक इवेंट और एक सिचुएशन और कुछ प्रोसेस होने वाली होती है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन लिखते हैं, उसे ही हम रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं। बेसिकली आपको रिपोर्ट राइटिंग में क्या क्या लिखना होता है मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम थ्योरी रीड करते हैं, ओके। सो आपको क्या करना होता है, रिपोर्ट राइटिंग किसके ऊपर की जाती है, सपोज आपके कॉलेज में या फिर आप जहाँ पे काम कर रहे हो आपके ऑफिस में अगर कुछ फंक्शन हुआ तो आप उसके बारे में रिपोर्ट राइटिंग कर सकते। सपोज इंडिपेंडेंस डे वेयर सेलिब्रेटेड इन स्कूल, ओके। स्कूल में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया, ओके। सो आप उस पर रिपोर्ट में लिख सकते हो, टाइटल लेना है, देन उसके बाद उसमें क्या क्या किया, स्टार्ट टू एंड सिक्वेंशियली लिखना है, ओके। देन हु आर द चीफ गेस्ट, ओके, आपको मेंशन करना है चीफ गेस्ट कौन कौन थे, देन फ्लैग होस्टिंग किसने की, ओके। प्रिंसिपल कौन है, ओके। सारा कुछ आपको मेंशन करना है और रिपोर्ट आपका रेडी, ओके। सो रिपोर्ट इज इंफॉर्मेशन ऑन एन इवेंट और सिचुएशन और प्रोसेस, ओके। रिपोर्ट मस्ट बी इन अ क्लियर सिंपल लैंग्वेज एंड डायरेक्ट स्टाइल दैट वुड हेल्प द रीडर फाइंड द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन क्विकली एंड इजीली। आपका रिपोर्ट एक क्लियर सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो पढ़ने वाला होता है ना उसे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो क्विकली और इजीली उसको मिल जाती है, ओके। When writing a report, keep in mind following things. जब आप रिपोर्ट लिख रहे होते हो तो आपको कुछ चीजें याद रखनी है। कौन कौन सी मैं बताता हूँ। What is report about? रिपोर्ट किसके बारे में, Who is it meant for? ये किसके लिए आप लिख रहे हो। सपोज आप प्रिंसिपल के लिए लिख रहे हो या फिर आपके बॉस को लिख रहे हो, किसके लिए रिपोर्ट लिखते हो। एंड व्हाट विल इट बी यूज फॉर, इसका यूज क्या होने वाला है, ओके। सो ये तीन चीजें याद रख के आपको रिपोर्ट राइटिंग करनी है, ओके। रिपोर्ट आर ऑफ थ्री काइंड्स, न्यूज़पेपर रिपोर्ट, रिपोर्ट ऑफ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट एंड प्रोसेस एंड ऑफिशियल रिपोर्ट, ओके। न्यूज़पेपर रिपोर्ट में कौन से रिपोर्ट आते हैं, एक्सीडेंटल रिपोर्ट या फिर कुछ रिपोर्ट्स, एक्सीडेंटल रिपोर्ट आते या फिर कुछ मतलब कुछ फंक्शन हुआ या फिर सपोज गवर्नमेंट की तरफ से कुछ हुआ तो उसके बारे में रिपोर्ट आ सकते हैं, ओके। देन पॉलिटिक्स से रिलेटेड रिपोर्ट आ सकते हैं, ओके। अगर पॉलिटिक्स की कुछ मीटिंग हुई जरूरी जो होती है उसके बारे में लिखते, ओके। सब चीजों के बारे में नहीं लिखते, ओके। एंड साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट एंड प्रोसेस रिपोर्ट होते हैं, देन ऑफिशियल रिपोर्ट। सो आपके जो प्रोग्राम्स के रिपोर्ट होते हैं वो ऑफिशियल रिपोर्ट्स में आते हैं, ओके। तो मतलब कुछ फंक्शन सेलिब्रेट किया या फिर आपने कुछ आपके कॉलेज में कुछ अलग हुआ, ओके। आपने कुछ कैंप निकाला वगैरह वगैरह एक्सेट्रा, ओके। देन दिस इज सैंपल ऑफ रिपोर्ट। देखो ये न्यूज न्यूज से रिलेटेड रिपोर्ट है। अर्थक्वेक इन नेपाल, ओके। अर्थक्वेक इन नेपाल, दिस इज टाइटल ऑफ रिपोर्ट। ये न्यूज़पेपर रिलेटेड रिपोर्ट है, ओके। सो इसके बारे में क्या लिखा है, द स्मॉल स्लीपी टाउन ऑफ भक्तापुर was shaken by an earthquake that struck without warning at 11:56 a.m. on 25th April 2015। सो आपको डेट एंड टाइम भी मेंशन करना है अगर आप एक्सीडेंटल रिपोर्ट लिख रहे हो या फिर आप ऑफिशियल रिपोर्ट में भी डेट एंड टाइम लिख सकते हो कि फंक्शन कब हुआ कब नहीं, ओके। सो यहाँ पे मेंशन किया है डेट एंड टाइम, ओके। और डैमेज क्या क्या हुआ उसके बारे में लिखा है। देन earthquake the earthquake triggered an avalanche on Mount Everest, killing 21, making April 25, 2015. Okay.
सो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है। और 250 पीपल वेयर रिपोर्टेड मिसिंग, कौन कौन कितने लोग मिसिंग है, कितने डेथ हुए और किसने मदद की। ओके, सो उसके बारे में भी यहाँ पे लिखा है। तो आपको रिपोर्ट इस तरह से लिखना है, मतलब सिक्वेंशियली लिखना है, स्टार्ट में क्या हुआ, फिर बीच में क्या हुआ और फिर एंड में। ओके, सो दिस इज रिपोर्ट राइटिंग। ओके, सो आई होप दैट you understand the report writing as well as writing resume. Okay, सो आप रिपोर्ट में सोर्स भी मेंशन कर सकते हो, अगर आपके पास कुछ वेबसाइट वगैरह है तो उसका सोर्स भी आप मेंशन कर सकते हो। ओके, सो दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस रेज्यूमे राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग, प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन और डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। ओके, सो दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। आई होप दैट आपको रिपोर्ट राइटिंग और रेज्यूमे राइटिंग समझ में आया होगा। ओके, so that's it for today. If you like this lecture, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. Okay, so this note is available on Telegram channel, link is available in description box. Okay, so that's it for today. Till then, tata, bye bye.